Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. ऑल द पीपल आर बिगिनर इन द मार्केट. वीकली 21 के बिलो हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया. लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स एंड सी ओवर हियर. मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वी डिडंट हैड 3 डेली क्लोजेस. पहले उसको देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास डाटा पॉइंट था of 28th of June, then 2nd of August and 16th of August. और हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट में हमने 3 कंसेक्टिव क्लोजेस नहीं किए थे डेली पे बिलो द स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारे पास हुए और कल मैंने बोला था कि आपको 46,905 पॉइंट्स यू विल हैव टू वॉच फॉर दैट. if there is a close below that, then it is going to initiate the targets to the downside. Downside पे हम देख लेते हैं डेली पे. ये हमारा लास्ट मूव है, उसको हम रिट्रेस करके देख लेते हैं फिबोनाची पे कि हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस क्या आ रहे हैं. तो यस 0.618 गोल्डन पॉकेट रेशियो जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली इट इज इन कॉन्फ्लुएंस विद 200 SMA एंड 200 EMA. So we can come down over to here, and before that, yes, we can bounce before from 0.5 level. But if none, then obviously this is going to be the first target on the smaller term time frame, which is daily. Weekly के ऊपर हमारा जो structure है, इट हैज़ नॉट ब्रोकन येट. मैंने बताया था कि वीकली के ऊपर तब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा जब तक हम इस लो को के नीचे दूसरा एक और लो नहीं बनाते, विच इज समवेयर अराउंड 43,791 पॉइंट्स. सो अंटिल देन मैंने बताया था कि यहाँ पे व्हाट कैन फॉर्म इन द फ्यूचर इज, और हमारे पास ये वाला जो लेवल है विच इज 50 सिंपल मूविंग एवरेज. दिस इज ऑल्सो इन कन्फ्लुएंस विद द डेली 200 SMA एंड EMA, which is somewhere around at 45,500 points. यहाँ पे ये 40 somewhere around 45,000 points खड़ी है ये वाली 50 MA. तो obviously it is going to happen over time, और maybe अगर next week होता है तो it is going to jump up, and somewhere it is going to be then again somewhere at the 45,500 points level, which will then again come in confluence with the daily 200 MA and EMA targets. Shorter term time frame mein, we will have to see if we have any divergences on the chart, so that we can see if any bounces could happen. No, I don't see any sort of divergence, but there is a divergence forming from this point and this point. It can initiate targets to the upside again to the 21 EMA at initially, but if it closes above 21 EMA, then of course we can look for further targets to the upside. But the divergence is confirmed right now. It is hidden bullish divergence. If you can see this point over here, we have a lower. Let me go it this way. You can see this point. This is a lower point, and this is a higher point. While on the index, we can see this one is higher and this one is lower. So the confirmation is here. We did close the very second last hour above it. We retraced the whole candle before that. So this is the confirmation. और उस confirmation में कल सुबह जो है, I think there can be a move first to the upside somewhere around this level. But we'll have to see कि ये resistance के तौर पे वापस test करने जाता है या it can reverse the momentum from here. तो उसके लिए shorter term time frames में कल you will have to watch out for that. 21 EMA is going to be the first resistance, of course. जिस तरह यहाँ पर थी इस पॉइंट के ऊपर, again if it comes up, this is going to be the first resistance as 46,915 points, somewhere around that level. अगर उसको हम वहाँ से दोबारा रिजेक्ट होते हैं तो it is again going to initiate it to the downside. इसके अलावा कुछ न्यूज़ देख लेते हैं मार्केट्स में. Everybody is talking about the MSCI reclassification, जिसमें वो डाउनग्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान को फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स टू दी फ्रंटियर मार्केट्स. उसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गाइड यू कि ये कोई क्या कहते हैं ना, IMF नहीं है. इट्स नॉट वर्ल्ड बैंक, इट्स नॉट BIS. इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड sort of classification index by Morgan Stanley. ठीक है, ये अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ इंफॉर्मेशन जारी रख करते हैं कि कौन सी चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए परसेंटेज, और कौन सी मार्केट्स जो हैं दे आर मोर हैपनिंग, या पैसे किस तरफ ज़्यादा हैं. तो इट्स नॉट इन एनी सेंस एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैलिडेशन ऑफ द मार्केट्स. इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है. और न्यूज़ जो है वो कनेक्टेड
कनेक्ट की जा रही होती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ मार्केट्स के अंदर किसी किस्म का कोई ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, तो कोई ना कोई न्यूज़ उसके साथ लिंक कर दी जाती है हमेशा, एंड आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। एक बड़े फेमस ट्रेडर थे बर्नार्ड बरूच, ही वंस सेड, शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। तो आई हैव बीन सेइंग दैट फॉर पास्ट वीक्स दैट मार्केट जो है वो साइडवेज है, और जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक मूव नहीं आएगा to the upside or to the downside. And yes, we have broken the structure on the smaller term time frames. तो उसमें हमारे पास मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर अब जब ब्रेक हुआ है तो उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद वी कैन इनिशिएट मूव टू द डाउन साइड, एंड बट देन अगेन इट वाज लिंक्ड टू अ न्यूज़। जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। इसके अलावा हमने देखना है USD टू PKR। लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग। 168 पॉइंट मैंने बोला था कि 3 जो है वो दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूज रेजिस्टेंस ओवर हियर। सो 168.3 इज रेजिस्टेंस राइट नाउ। और मैंने कल भी बताया था कि ऑल्दो देयर आर डाइवर्जेंसेस ओवर हियर on the RSI, but then again मैंने बताया था कि पहले I think the targets are going to hit to 168.3, और अगर हमारे पास क्लोज ऊपर होता है, because this is the line in the sand, वो देखना पड़ेगा कि either we are comfortable with a daily close above to initiate further targets to the upside, और या हमारा वीकली से काम चलेगा। तो उसमें अभी there can be a pullback from 168.3, जो उसको हम आज फिर दोबारा से देख लेते हैं। If we retrace it to 168.3, which is previously our resistance, तो हमारे पास जो targets initiate होते हैं वो they are somewhere around 162, which is 0.382. These are the levels. So let me guide you. It's 164, 162, and then the golden pocket 0.618. It rests at 158.1. So it's going to be very tricky for now, क्योंकि मैंने बताया था कि इट्स अ ह्यूज बुल फ्लैग फॉर्मेशन एज वेल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वो भी मैं दोबारा दिखाता हूँ। दिस इज समवॉट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑन द वीकली, जिसको आप इसमें देख सकते हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग अ बुल फ्लैग ओवर हियर, एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक अबव इट is going to initiate the bigger targets on the weekly time frame, but line in the sand is once again 168.3, so you will have to watch out for that. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।